Hello, hi, and welcome all of you to Utkarsh classes. I hope all of you guys are fine and also waiting for this particular topic that we people have brought it to you, that is weekly editorial analysis, and this is Garima Sharma, your English mentor. So basically, why only editorial analysis that we are bringing up to you is because editorial is the first choice of the examiners. That is true and you people know it. But why only editorial is the first choice of the examiners? The thing is because it just confuses your mind, because it invokes your intellect basically. Very good evening all of you. So it invokes your intellect. And why is it important for in any exam that your intellect should be invoked or your intellect should be questioned? It is because whenever an examination is done, or whenever कोई भी examination जब होता है, whenever an examination is there, that it wants to just try that how much intellectual you people are, what are your abilities while solving problems. Can you solve any problems? Can you just comprehend what is being said to you? Can you just comprehend what is written there in it? That is why editorial passages are the first choice of examiners. Yes, very good evening Abul, very good evening Vijay, very good evening Saina, Krishna, Uttam, and very good evening to all of you. Now basically, editorial analysis. What is editorial actually? Editorials are those words, or you can say those piece of writings that are written by the editors of esteemed newspaper, and they could just tell their opinions in that. They could express their opinions. They could criticize a topic that is being trending, or you can say that they could be praising, they could be criticizing. They are just there to express their views. Basically, they want to discuss what they feel with you people. That is what is an editorial is. Now, editorial analysis. I have seen many people, and I have also I have also questioned many students that what problems do you face mostly while solving the editorials, or what are your problems while solving editorials. So the most common answers basically that I have got is, the first problem that you people face is what problems do you people face? The first problem is, ma'am, it has very cumbersome language. That is difficult to interpret. मैम उसकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, एडिटोरियल बिल्कुल समझ में नहीं आता है. येस, वेरी गुड इवनिंग प्रियंका. सो एडिटोरियल बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज कोई लिखता है क्या, एंड सो ऑन. सो यहाँ पर जब उसकी लैंग्वेज कम्बरसम है, ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक. किस तरह से ऑप्टिमिस्टिक होंगे हम कि भाई कम्बरसम लैंग्वेज है, डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट है, इसका मतलब क्या है कि वो चाहता है कि हम उसको समझे. दिस पर्टिकुलर थिंग दैट cumbersome language and difficult to interpret is actually what is invoking our intellect here. So it invokes your intellect. It works on your intellect. Second thing is, ma'am, I have encountered many new words here that I don't know the meaning of. मुझे इसका मतलब ही नहीं पता है. ऐसे words कोई देता है क्या? So इसका meaning नहीं पता है, मतलब नहीं पता है. इसका मतलब difficult words that would improve your vocabulary here. भाई लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब आपका इंटेलेक्ट पे काम हो रहा है. अगर आपके पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स है जो उस एडिटोरियल में यूज़ हुए हैं, डिफ़िकल्ट मैक्सिम्स है, यू कैन से डिफ़िकल्ट इडियम्स और फ्रेजेस है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो नरिश कर रहा है आपकी वोकैबुलरी को, वो एनरिच कर रहा है आपकी वोकैबुलरी को. एंड थर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, मैम, editorial takes so much of time. It is so much time consuming. Yes, editorial is time consuming.
no doubt in that. But the thing is, editorial, though it is time consuming, but it is more or less strengthening your reading abilities, your reading skills. So yes, it is time consuming, but it is doing what? It is working on what? It is working on your reading skills basically. So you are on a plus side while reading an editorial. Why you are on plus side? Because your intellect is invoked, your vocabulary is nourished, as well as your reading skills are also developed, your reading skills are also modified. And the perk on it is, यहाँ पर जो है आपके लिए बोनस पॉइंट क्या हो जाता है? सो आपका बोनस पॉइंट जो है वो ये हो जाता है यहाँ पर कि आपकी ग्रामर अच्छी हो जाती है। इसी के साथ द इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स जो है, जो आपकी स्पोकन इंग्लिश है, वो भी यहाँ पर डेवलप हो जाती है, वो भी यहाँ पर मॉडिफाई हो जाती है। सो यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज ग्रामर गेट्स मॉडिफाइड, and these are your perks of reading editorial, or your perks of just focusing on editorial. That's why editorials are the first choice of each and every examiner, and also of those teachers that want their student to perform better in examination. So that's why I also vouch that you should read editorial, not learn editorial. Now another problem that is faced by you people is, the fourth problem and the most important problem that we are going to address today only, here itself only, that what problem is there? That fourth and most important problem is that we are the time we reach the end of the editorial, or the time we reach at the end of the editorial, or the time we reach at the conclusion of the editorial, we forget what we have read previously. इसका मतलब क्या है कि भाई जैसे ही हम लास्ट तक पहुँचते हैं तो पहले क्या पढ़ा है वो तो हम भूल ही जाते हैं. सो यहाँ पर जो है मेमोरी स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है while reading editorial. बट क्या करें, आजकल की लाइफ है, मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं है. सो द थिंग दैट यू कुड डू फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इज memory problem. The solution for this memory problem is to make bullet points. We shall be doing this particular thing in today's editorial also. You should make bullet points. क्या होते हैं bullet points? Bullet points are with each and every paragraph. हर एक paragraph के साथ जो है हमको उसको याद करने के लिए, just like when we go to a different path suddenly, कोई भी different path पे अगर हम जाते हैं अचानक से, तो हमको first time जब हम जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, what we people usually do, क्या करते हो तुम लोग? जब भी तुम लोग कोई जो है एकदम डिफरेंट पाथ पे जाते, एकदम अलग ही स्ट्रेंज पाथवे पर जाते हो, या फिर कोई अलग रास्ते से जाते हो, तो क्या करते हो? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू पीपल मोस्टली डू? क्या करते हैं हम लोग? वी रिमेंबर द लैंडमार्क्स. वहां पर क्या क्या लैंडमार्क्स है? ओके, कभी कभी पैसेज का अंदर का मतलब समझ में नहीं आता है, और ऑथर क्या कहना चाहता है वो भी समझ नहीं आता है. सो यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. जब हम देखते हैं पैसेज का अंदर का मतलब क्या है, तो वो हमको कैसे समझ में आएगा? दैट द सेम थिंग, दैट बुलेट पॉइंट्स विल हेल्प अस. ये जो बुलेट पॉइंट्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. यू कैन ऑल्सो से दैट दे आर द मजिशियन फॉर यू पीपल. कैसे मजिशियन है ये बुलेट पॉइंट्स? ये आप लोगों को जो है बहुत हेल्प करेंगे while reading an editorial, and also to understand the inner meaning, what the author wants to say, or what is the tone of the passage. सो यहाँ पर करेक्ट, यहाँ पर जो है जब हम कहते हैं कि भाई हम एक अलग ही रास्ते पर चले गए, हमको पता ही नहीं है ये रास्ता कौन सा है, नया रास्ता है, अ न्यू पाथवे इज देयर. सो व्हाट वी पीपल यूजुअली डू इज वी रिमेंबर द लैंडमार्क्स दैट आर देयर, सो दैट द नेक्स्ट टाइम व्हेन वी फॉलो द सेम पाथ, वी डोंट थिंक दैट इट इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर फॉलोइंग दिस पाथ, और इट इज़ आवर फर्स्ट टाइम. ओके, तो यहाँ पर भी हम जो बुलेट पॉइंट्स है, दीज ऑल्सो एक्ट एज अ लैंडमार्क फॉर यू पीपल. कैसे लैंडमार्क एक्ट करते हैं? हर एक पैराग्राफ के साथ ट्राई टू मेक सम बुलेट पॉइंट्स. नाउ व्हाट आर बुलेट पॉइंट्स दैट आई एम डिस्कसिंग हियर? बुलेट पॉइंट्स आर बेसिकली द हाई पॉइंट्स, यू कैन से, or the summarized points
जो समराइज्ड पॉइंट्स है किसी भी पैराग्राफ के, उसको हम कहते हैं बुलेट पॉइंट्स. नाउ बुलेट पॉइंट्स जो है ड्यू एडिटोरियल्स में से क्वेश्चंस आते हैं. इनफैक्ट एडिटोरियल कैन ऑल्सो एक्ट एज अ पैसेज इन योर एग्जामिनेशन, एंड दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग. यहाँ पर जो है एडिटोरियल जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं, और एडिटोरियल से क्वेश्चंस भी आते हैं. बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें एडिटोरियल्स को जो है पैसेज के फॉर्म में लेकर एज अ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यू पीपल गेट दीज एडिटोरियल्स एज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इन योर एग्जामिनेशंस. एंड नॉट ओनली क्लैट, मोस्टली बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर एडिटोरियल यूज़ होते हैं, वहाँ पर एडिटोरियल यूज़ होते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. यस, वेरी ओके. राम राम श्याम. सो यहाँ पर जो है मेमोरी प्रॉब्लम जो है उसका भी हल निकल गया, और जो हम बोल रहे हैं कि ऑथर क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, उसका भी हल निकल गया. किससे निकल गया? जो हमारे बुलेट पॉइंट्स है बेसिकली, उनसे निकल गया. नाउ बुलेट पॉइंट्स जो है वो उसको हम क्या कह रहे हैं कि जो समराइज्ड पॉइंट है किसी भी एडिटोरियल के, उसको हम क्या कह रहे हैं? बुलेट पॉइंट्स. नाउ द थिंग बिफोर स्टार्टिंग टुडेज एडिटोरियल इज दैट आई वुड सजेस्ट यू टू रीड एडिटोरियल डेली. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग जो हमको प्रैक्टिस में लेकर आनी है, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि हमको एडिटोरियल डेली रीड करने. समझ में आए नहीं आए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट द थिंग इज़ दैट यू शुड मेक इट अ प्रैक्टिस टू रीड एडिटोरियल डेली. सो फर्स्ट इज़ रीडिंग. और क्यों रीड करना है? क्यों कह रही है मैम कि एडिटोरियल डेली रीड करना है? आपकी रीडिंग स्किल्स ही इंप्रूव होगी. अगर और कुछ इंप्रूव नहीं हुआ तो आपका जो टाइम है रीड करने का, जो पढ़ने का टाइम है, वही कम होगा. टाइम बढ़ेगा नहीं, कम होगा. सो यहाँ पर रीडिंग स्किल्स एंड टाइम जो है वो कम लगेगा अगर आप डेली एडिटोरियल्स पढ़ेंगे. सेकेंड थिंग इज दैट ट्राई टू मार्क डिफिकल्ट वर्ड्स. ट्राई टू मार्क डिफ़िकल्ट वर्ड्स. जब आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स मार्क करेंगे तो क्या होगा? जब आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स मार्क करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, दैट आई विल टेल यू आफ्टर डूइंग दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल. बट हमको जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है वो क्या करनी है? एडिटोरियल्स के अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको मार्क करिए और ट्राई टू फाइंड इट्स मीनिंग. नाउ मीनिंग फाइंड करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब मीनिंग ही पता नहीं होगा तो हमको यही पता नहीं चलेगा कि वो वर्ड एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है. नाउ मीनिंग इज दैट मोस्ट ऑफ यू पीपल द थिंग दैट मोस्ट ऑफ यू पीपल डू इज यू जस्ट फाइंड अ सिंगल मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड एंड इट्स डन. आप लोग क्या करते हैं कि एक वर्ड का एक ही मीनिंग निकाल लेते हैं, एक ही मतलब जो है, जो शुरुआत में आता है गूगल पे वो हमने निकाल लिया, या शुरुआत में जो डिक्शनरी में दिया है वो निकाल लिया एंड इट्स डन. नो, each and every word in English has more than two meanings, or you can say has more than one meaning. Each and every word in English I can vouch is ambiguous there. यहाँ पर बस फ़र्क ये है कि वो डेली रूटीन में उनके मतलब यूज़ में नहीं आते हैं. दैट्स वाई वी यूजुअली डोंट लर्न देम. बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फाइंड टू मीनिंग्स एटलीस्ट फॉर अ सिंगल वर्ड, एंड आई एम श्योर दैट यू वुड फाइंड इट. सो हर एक वर्ड एम्बिगुअस होता है, तो कोशिश करिए कि आप जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको मार्क करें और उनके मीनिंग्स निकालें. और मीनिंग्स किस तरह से निकालने हैं दैट वी विल डिस्कस टुडे ओनली. नेक्स्ट थिंग इज़, आफ्टर मार्किंग डिफिकल्ट वर्ड, मार्क द सेंटेंसेज दैट यू आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट. आप जो सेंटेंसेज जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी मार्क करिए. मार्क द सेंटेंसेज. And also while marking the sentences, try to make bullet points. Try to make bullet points, try to find what literary devices used here,
try to find what tone the author is following, or what is the attitude of the author towards this particular subject. Is the author very happy towards the subject? Is the author praising that subject? Is the author criticizing that subject? Or does the author just want to discuss what is being there, or he just want to express his feeling? He don't want to go into deep discussion. He just want to express what he feels about that particular topic. That would be done only if you read only if you would read daily editorials, and that would help you also to identify the tone and attitude of the author, which is the most common question that examiner would ask you people about reading comprehension, or about in the comprehension passages. Now let's take today's passage, that is based on the paradox of bricks, its new pathway. The paradox of bricks, its new pathway. Now this particular topic, or this particular editorial is from 24th May 2023. Now this particular passage is basically discussing about, as it is already written in this in its title, the paradox of bricks. What is paradox basically? Paradox का मतलब क्या होता है? Paradox का मतलब होता है the contrary. Paradox means something that has contradiction. So the paradox of bricks, its new pathway. Now यहाँ पर जो है the paradox of bricks, its new pathway, the title itself is saying that that's something that is related to something that is contrary to the well established fact should be discussed in this particular passage. So try and let's read this particular passage, or you can say just read this particular editorial. So mysterious are the ways in which multilateral groupings prosper and wither away. Mysterious are the ways in which multilateral groupings prosper and wither away. So here the author is trying, from this particular first line only we could infer, यहाँ पर author जो है वो किसके बारे में discuss करेगा? What would the author discuss here is about the multilateral groupings. Multilateral means that has multiple dimensions, is called as multilateral. Groupings means assemblies, or you can say meetings, or you can say a group of anything is called as groupings. So mysterious are the ways in which multilateral groupings prosper and wither away. So now who would tell me yes? Correct, Brazil, Russia, India, China and South Africa. So here BRICS is composed of these countries only. So who will tell me the meaning of this particular word wither? Wither का मतलब क्या होता है? Yes, very good evening Kaushal. What is the meaning of wither? In which the multilateral groupings prosper and wither away. Prosper का मतलब क्या होता है? Flourish करना. उसको हम क्या कहते हैं? Prosper करना. Grow करना. उसको हम क्या कहते हैं? Prosper करना. So prosper means to grow or flourish. Prosper means to grow or flourish is called as prosper. You people will give me the meaning of wither away. What is meant for withering away or wither away? It's okay Kaushal, very good evening. What is the meaning of wither away? Now, the non-aligned movement and G77 had their heyday in Cold War era. Now, the non-aligned movement and G77 had their heyday in the Cold War era. Later, they lost their relevance, but they still exist. Now wither, the words that we are going through that are difficult is wither, heyday. Later they lost their relevance, but they still exist. The South Asian Association for Regional, correct, prosper means samriddhi, very good Amritwa. Now the South Asian Association for Regional Cooperation Summits ended in 2014, but the Secretariat somehow keeps itself busy. Despite serious policy divergences on China and Myanmar, the Association of Southeast Asian Nation, that is ASEAN, continues to function, consuming reams of paper to issue long communiques. So here the difficult words that we have come across are wither, heyday, summit and communiques. Now the first thing here is what could be the bullet point, or what could we can say what could be the crux of this particular paragraph is that
Here the author is just discussing, or the editor of the paper is just discussing about what are the type of groupings or what are the type of associations that different countries have formed, firstly, and secondly it has analyzed what types of associations have declined by the passage of time, and what types of association have what type of working that are associated with it. So here it is just, the bullet point for this is discussing different associations. Now it is up to you how many bullet points you want to form. You can also form 3 to 4 bullet points for each and every paragraph, but not more than that, because अगर आप bullet points ही 3 या 4 से ज़्यादा बनाएंगे, then what's the meaning of bullet points? Bullet points जो है वो सिर्फ इसीलिए बनाया जाता है कि आप उस पैराग्राफ का बेसिक जो क्रक्स है, जो समरी है, वो आप याद रख सके, या फिर जब हम लास्ट में पहुँचे तब हमको वो समझ में आ जाए कि अच्छा हमने इन पूरे पैराग्राफ्स में ये पढ़ा है. That is the meaning of bullet points here. Now for according to me, I just need this single bullet point, that is, it is discussing different associations that different countries have made or formed. So it is discussing that. Here it is analyzing what types of associations different countries have framed or different countries have formed, and what type of working they have. Now here the words that we have come across is wither. Wither का मतलब क्या होता है? That is decaying or deteriorating is called as wither. Second word is heyday. Very good question Amritwa. So heyday का मतलब क्या होता है? Heyday means a point of high success is called as heyday. Now heyday जो है a point of high success, इसका एक और synonym हो सकता है, that is zenith. Zenith could be its synonym. Heyday का मतलब होता है zenith. Now zenith हो गया है वो ऐसा पॉइंट जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा आप सक्सेसफुल रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? heyday कहते हैं. Next is summit. Summit, you know, associations, meetings, assemblies is called as summit. And lastly, communiques. Communiques means official orders or announcements. Official orders or announcements. Now discussing about this particular paragraph that the author has used here in this the first paragraph. So what could this mean? Here it is discussing different countries, but the sentence here is, but the secretariat somehow keeps itself busy. The secretariat is actually a building, or you can say an agency. Despite का मतलब होता है हमजा, in spite of, इसके बावजूद, उसको हम क्या कहते हैं? Despite. लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस यूज़ किया है, secretariat somehow keeps itself busy. Secretariat is, you can say a type of building or is a type of agency. Now an agency or building is given an attribute of human. ह्यूमन का एट्रीब्यूट दिया है इस एजेंसी को या बिल्डिंग को. क्या एट्रीब्यूट है वो? कि भाई वो बिजी रखता है अपने आप को. इसका मतलब कि वहाँ पर जो है पूरा समय कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. इट कीप्स इटसेल्फ बिजी. अगेन यू कैन से इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. जब हम किसी भी नॉन लिविंग बीइंग को इस तरह के एट्रीब्यूट्स देते हैं, इस तरह की क्वालिटीज़ देते हैं जो कि इंसानों वाली हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर जो बोला है, Asian continues to function consuming reams of paper to issue long communiques. तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? यहाँ पर reams of paper means large amount of paper is called as reams of paper, and it is also written here long communiques. Now what could this mean? इसका मतलब है that in this Asian association they are employing bureaucratic behavior or bureaucratic tendencies there, because in bureaucracy also you would consume reams of paper for official letters, and a lot of paperwork is being there. So यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं that it is consuming reams of paper to issue long communiques, it means
कि यहाँ पर जो है ब्यूरोक्रेटिक नेचर है या फिर इस पर्टिकुलर एसोसिएशन का जो नेचर है दैट इज़ मोर ऑफ पेपर वर्क. Next passage or next paragraph here, sorry. The case of BRICS is truly remarkable. Despite several achievements, it began to lose its sparkle. COVID-19, the Galwan clash, the Ukraine conflict resulted in increased global economic stress, damaged India-China ties. So here the case of BRICS is truly remarkable. It means it is putting forth that it would be discussing about this particular BRICS here. एंड डिस्पाइट सेवरल अचीवमेंट्स इट बिगैन टू लूज इट्स स्पार्कल. बहुत सारे अचीवमेंट हुए लेकिन फिर भी इसने अपना जो चार्म है वो खो दिया है. नाउ डैमेज्ड इंडिया चाइना टाइज एंड turned Russia into a diminishing power. The group may have lost its mojo, but numerous nations wants to be admitted, thus showing the paradox of BRICS. Now, what could you infer from this particular paragraph is that करेक्ट. यहाँ पर अगर हम देखें कि भाई हेडे का मतलब क्या है तो यू हैव क्लियरली डिस्क्राइब्ड इट कि उमंग का जो समय होता है उसको हेडे कहते हैं. नाउ यहाँ पर इट हैज़ ब्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहा है एडिटर, ब्रिक्स के बारे में बता रहा है एंड इट इज़ ऑल्सो सेइंग दैट इट हैज़ टर्न्ड रशिया इनटू अ डिमिनिशिंग पावर. द ग्रुप मे हैव लॉस्ट इट्स मोजो. मोजो का मतलब क्या होता है? मोजो मीन्स द चार्म इज कॉल्ड एज मोजो. It has lost its charm, but then also many nations wants to be admitted, thus showing the paradox of BRICS. Now paradox of BRICS का मतलब क्या है? Contradiction or contrary to what is being said or what is being established is called as paradox here. Now यहाँ पर paradox जो है वो क्या है कि however the BRICS has lost its charm. It has lost its charm because of many geopolitical factors, but then also there are several nations who wants to get admitted or who wants to get enrolled into BRICS. That is the paradox of BRICS. Now the thing is, or human tendency is there that if something loses its charm, that we people just maintain some distance from that particular thing. But here the thing is that क्या चीज़ है यहाँ पर कि however BRICS has lost its charm, but then also there are some nations who want to get admitted into it or who wants to get enrolled into that particular association or in that particular BRICS. That is the paradox of BRICS that is being discussed by the author here. Now the balance sheet, Jim O'Neill's conception of BRIC. Now what is conception? Conception means idea. So here for this passage, for this particular paragraph, the bullet point could be it is discussing the paradox of BRICS. This would be my bullet point here. Now Jim O'Neill's conception of BRIC, a grouping of 4 emerging economies. So at the initial stage, there were only 4 emerging economies that were a part of BRIC. That was Brazil, Russia, India and China. May not have gone far, but it was popular acronym over 2 decades ago. 2 decades. 2 decades means a period of 20 years is called as 2 decades. So यहाँ पर 2 decades का मतलब क्या होता है? 2 decades means 20 years. A period of 20 years is called as 2 decades. However, 2 of its components joined hands with South Africa to form IBSA, that is India, Brazil, South Africa in 2003. China was keen to join it in century's first decade and managed to enlist South Africa's support. So what is the author discussing here? That before this particular IBSA, BRIC was formed, and after that in 2003, IBSA was formed containing only 3 countries, that is India, Brazil and South Africa, and China also wanted to enroll in this particular association, but and it has also managed to gain support of South Africa, but unfortunately could not made its cut into this particular association. So here this word keen means when someone is eager or when someone wants something very greedily is called as keen here. So keen to join in the century's first decade and managed to enlist South Africa's support. Enlist means what could we mean by enlist? Enlist का मतलब क्या होगा? You people will tell me. What is the meaning of this word enlist? In the last I would ask you people, enlist का मतलब क्या होगा?
But Brazil and India would not go along, maintaining that forum was open to democracies only. So here Brazil and India didn't support the enrollment of China into that IBSA. And what was the reason behind it? The reason behind it was that it was open only to the democracy. Only democratic nations would be allowed in that IBSA, not any other nation. Now, rebuffed, China played a trump card. Rebuffed means rejected. After being rejected, China played a trump card. Playing a trump card, again it is a type of idiom here. Playing a trump card means to do something that is unexpected in order to gain some advantage. Is called as trump card. हम कहते हैं ना हुकुम का पत्ता, तो वहाँ पर उसको उसी तरीके से होता है ट्रम्प कार्ड. ट्रम्प कार्ड का मतलब क्या होता है कि किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अचानक से जो है उसने इस तरह का काम कर दिया कि उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लेइंग अ ट्रम्प कार्ड. एनलिस्ट का मतलब दर्ज करना. करेक्ट अमृतत्व मीन्स ज्वाइन करना. एनरोल करना इज कॉल्ड एज एनलिस्ट. वेरी गुड. To enroll into something, to join something is called as enlist. So here rebuffed means rejected. China played a trump card and decided to bring South Africa into BRIC. It means if I could not go or if I could not make it to IBSA, I should make South Africa into BRICS. So यहाँ पर कि भाई अगर मैं IBSA ज्वाइन नहीं कर सकता, no matter वहाँ पर भी कौन सी दो कंट्रीज है मेरे साथ. IBSA के अंदर बाकी दो कंट्रीज कौन सी है? अपार्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका देयर इज इंडिया एंड ब्राज़ील ओनली. सो लेट्स व्हाई नॉट जस्ट ब्रिंग साउथ अफ्रीका into my team or into my arena. So what it has done, it has just made South Africa into, it has just merged South Africa into BRIC and formed BRICS there. ओके, सो यहाँ पर उसने जो है ट्रम्प कार्ड खेला कि ठीक है मैं नहीं जा सकता, इट्स फाइन, इट्स ओके, आई शुड ब्रिंग साउथ अफ्रीका इनटू माय टीम एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स वाज देयर. इट मीन्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. IBSA has been unable to hold its summit since 2011. Now 2011 के बाद से IBSA जो है अपने summit hold नहीं कर सक रहा है. But BRICS has held 14 summits in the past 13 years. So what could be my bullet point for this particular paragraph? It is the trump card by China. This would be my bullet point for this particular paragraph. Correct. Accept karna. An admission rush. Now yet 19 countries now stand in line. Now it is about what are the future prospectus of BRICS here. Now yet 19 countries now stand in line eager to join BRICS. The regional breakup is as follows. Latin America 4, Argentina, Nicaragua, Mexico, Uruguay. Africa 5, Nigeria, Algeria, and many other countries that are there to join, that are willingly wanting to join BRICS there. Now several explanations may be offered. First, China is pushing the expansion as a strategic device to extend its global influence. Now what the editor here is trying to say is that why there is an expansion of BRICS is made here. So यहाँ पर जो है ऑथर ये ऑथर बता रहा है कि इसके एक्सप्लेनेशंस क्या हो सकते हैं कि इतनी सारी कंट्रीज जो है वो ब्रिक्स ज्वाइन करना चाह रही है. Okay, for example, the first thing that the editor wants to say is that because China is pushing the expansion as a strategic device, means he is playing strategically to extend its global influence. China is playing strategically to expand its global influence, or you can say global horizon. अपना global influence basically जो है China वो expand करना चाह रहा है to several countries. Second, the demand to join BRICS stems from FOMO. Now, or
editor is also using slangs. Slangs कब use करते हैं? When you want to connect with the emerging audience or when you want to connect with the readers. Okay, now current readers, जो अभी के टाइम के जो readers हैं उनसे जब हम connect करना चाहते हैं तो mostly हम इसी तरह के words का use करते हैं जो कि उनको अच्छे से समझ में आए. So editor भी जो है यहाँ पर क्या use कर रहा है? Slang use कर रहा है, and that slang is FOMO. And I bet you people know the meaning of this word FOMO, or the meaning of this acronym FOMO. And however, editor has also given this, that fear of missing out on the membership of the club has some visibility. Third, many realize that the doors of other groupings are closed to them. Finally, the clamor reflects prevailing anti-Western sentiments and a pervasive desire to create a sizable forum of the global South. So here the author, you can say कि editor जो है, editor is skeptical about the expansion of BRICS. And why is he skeptical or why is he cautious? Because they don't have a common agenda. इनके पास एक common agenda नहीं है that we would develop this or we would develop that particular thing. They have you can say selfish agendas are there with each and every country for the expansion of BRICS. And what are their selfish agendas? Firstly is that China want to expand its global horizon. Secondly is countries are joining BRICS because of FOMO, that they would miss out from us, that they would not miss, that they want कि भाई हम मिस ना कर जाए एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन के साथ ज्वाइन करना. तो यहाँ पर जो फोमो फैक्टर है वो उनको ड्राइव कर रहा है, फोमो फैक्टर उनको ड्राइव कर रहा है टू ज्वाइन ब्रिक्स. नेक्स्ट इज दैट, third is that many realize that the doors of other groupings are closed to them. Now third क्या point दिया है editor ने कि क्यों BRICS join करना चाह रही है countries? Because third option or there is no second option with these countries, that's why they want to join BRICS here. Next is finally the clamor reflects prevailing anti-Western sentiments and a pervasive desire to create a sizable forum of the global South. Now here यहाँ पर क्या बोल रहा है? फाइनली ऑथर जो है वो एडिटर जो है वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है दैट दे वांट टू जॉइन ब्रिक्स फर्स्टली बिकॉज ऑफ द एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट्स. इट मीन्स द सेंटिमेंट्स दैट आर अगेंस्ट द सेंटिमेंट्स और देयर thought or their ideology that is against Western culture or Western perspectives is that's why this clamor is reflecting prevailing anti-Western sentiments and a pervasive desire. Pervasive का मतलब क्या होता है? Pervasive means जो prevalent desire है. Prevalent desire मतलब कि जो current desire है कि हम एक sizable forum create करें of the global साउथ. जो ग्लोबल साउथ का जो साइजेबल फोरम है, साइजेबल फोरम मीन्स अ प्रोमिनेंट फोरम और अ स्ट्रॉन्ग फोरम, अ स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द ग्लोबल साउथ दैट शुड बी दैट इज अगेंस्ट एंटी वेस्टर्न कल्चर, that has anti western sentiments here. Now the word clamor means noise, but here यहाँ पर अगर हम देखें तो clamor का मतलब क्या है? The different opinions that we are getting from different countries or different countries or different people is referred to as clamor here. Now pervasive means prevalent, something that is prevalent or something that is, you can say, trending is called as pervasive. The next BRICS summit will be hosted by South Africa on August 23 and 24. It could take decision on expansion and its criteria. Preparatory meetings of the foreign ministers and national security advisors are certain to deliberate on this topic. 3 options are available. Again, 3 options are available. What are the 3 options? A mega expansion that raises the membership from 5 to 21, thus surpassing the G20. Now the difficult words that we have encountered here is deliberate and surpass. The word deliberate means careful thought process or thoughtfully doing something, contemplating something is called as deliberate.
स्टेम्स का मतलब होता है, स्टेम्स मीन्स समथिंग इज इमर्जिंग और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम समथिंग, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेम्स. Yes, every Saturday this particular class will be there for you people. So stems means to emerge or to originate. Deliberate means thinking carefully. To think carefully is called as deliberate. And surpass mean to, you can say, overcome or exceed is also called as surpass here. 3 options are available. A mega expansion that raises the membership from 5 to 21. It means that there could be an expansion, a mega expansion that would just expand or just raise the number of countries from 5 to 21. And surpassing means exceeding the G20. Next is limited admission of 10 new members, each supported by the existing member, and admission of only 5 new members, 1 each supporting the existing members. It means it is expanding, that there are only 3 options, either 20, that first one is 21 countries would be enrolled in this BRICS. Second one is 10 new countries would be enrolled in this BRICS, and third one is 5 new countries would be enrolled in this BRICS. So third one is that 5 new countries would be enrolled in this BRICS. So here what could I do for this particular paragraph is that it is just explaining, or it is just telling us about the future prospectus of BRICS. Next is their veto. India favors expansion if it is based on agreed criteria and moves gradually. Should the third option win consensus, Argentina, Egypt, Indonesia, UAE and Bangladesh are the most likely states to make the cut. Now making the cut means, to get enrolled or to succeed is called as make the cut. Again it is an idiom. To get success is called as make the cut. Now here it is saying that should the third option win consensus, consensus means agreement. Argentina and these countries are most likely to make the cut. So it is saying that if the third condition goes true, agar jo third condition hai, what was the third condition? If the only 5 members would be enrolled in this BRICS, if the third condition would go true, then these countries or these nations are most likely to succeed, would succeed in enrolling in this particular BRICS there. Will the BRICS leader meet physically? Fairly unlikely. Now the question, the author is invoking a question, portraying a question to invoke your contemplation over this particular thing, that will the BRICS leader meet physically, and he is only answering that fairly unlikely. So what type of literary device that is used here is, जब question भी author कर रहा है और आंसर भी ऑथर खुद दे रहा है, then it is an example of hypophora. When the author is giving, when the author is asking you the question and he himself only gives you the answer, then it is an example of hypophora. Now because of its legal obligations relating to the ICC, that is International Criminal Court, so because of its legal obligations relating to ICC, South Africa has, as the host, may be compelled to arrest an honored guest, the President of Russia. Now you people have gone through this particular news that was also trending, that ICC has legally obligated or has legally compelled South Africa that if BRICS meeting would be held, and that too physically, then it is obligated to arrest the most honored guest there, that is the President of Russia, Vladimir Putin there. Now therefore chances are that digital summit will take place. Now in order to just overcome from this dilemma, इस dilemma से या फिर हम कह लीजिए इस धर्म संकट से बचने के लिए जो साउथ अफ्रीका है उसने क्या हल निकाला, in order to overcome from this dilemma, the solution that South Africa has made is that digital summit would be held.
डिजिटल समिट जो है वो होगा when the leaders talk they should reflect on strengthening BRICS and redressing the internal imbalance. जब leaders बात करेंगे then they should reflect on strengthening BRICS. How could they strengthen BRICS? How could they make BRICS stronger? And redressing the internal balance. Redressing means rectifying or correcting. Redressing means rectifying or correcting the internal imbalance. They should also know that once new members are admitted, they will certainly seek to change the group's name. Now, if the new members are admitted, then it is very apparent that the name would be changed because it would not be BRICS. Then the number of new members, the more the number of new members, the more will be the letters that they should have, that they should be incorporating in this particular BRICS. Now, perhaps the grouping's future will be better than its past. Now, the author, or you can say the editor, is being hopeful about the future prospectus of this particular association that is called as BRICS. So, here perhaps then the grouping's future will be better than its past. So, here it is discussing about the future prospectus. It is discussing in this particular passage, it is discussing about the expansion of BRICS. Here, future prospectus and possibilities. Now, अब जिन बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम याद ही नहीं रहता है, लास्ट में एडिटोरियल जब भी पढ़ते हैं याद ही नहीं रहता है क्या डिस्कस किया, देन वी शुड गो वन बाय वन. फर्स्ट में जो उसने डिस्कस किया, फर्स्ट में उसने क्या डिस्कस किया, डिफरेंट एसोसिएशन का एनालिसिस किया है उसने फर्स्ट पैसेज में. सेकंड पैसेज में ब्रिक्स जो है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ, क्या स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी थी, वहाँ पर जो है चाइना ने क्या ट्रम्प कार्ड प्ले किया उसके बारे में डिस्कस किया था. एंड थर्डली इट हैज़ ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स. नेक्स्ट जो उसने डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था, एडिटर ने नेक्स्ट क्या डिस्कस किया था, एडिटर ने जो है नेक्स्ट डिस्कस किया था अबाउट द कि अब जो है वो किस तरह से एक्सपैंड होगा ब्रिक्स, व्हाट विल बी द फ्यूचर स्ट्रैटेजी ऑफ ब्रिक्स टू एक्सपैंड. और यहाँ पर डिफरेंट 3 क्राइटेरियाज दिए थे, या यू कैन से 3 ऑप्शंस दिए थे कि इन तरीके से ब्रिक्स जो है वो एक्सपैंड हो सकता है. लास्टली जो है एडिटर ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स का. एंड लास्टली एडिटर ने जो है पॉसिबिलिटीज़ बताई है कि अगर जो है नेक्स्ट समिट जो कि ब्रिक्स का हो रहा है तो वहाँ पर क्या होना है, और इस डिलेमा से बचने के लिए साउथ अफ्रीका ने क्या सॉल्यूशन निकाला है. एंड लास्टली यहाँ पर जो है ब्रिक्स के जो लीडर्स हैं जब वो मीट करेंगे तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो डिस्कस किया है. सो दीज आर ऑल, जैसे ही मैं ये बुलेट पॉइंट्स जो मैंने मार्क किए थे, जैसे मुझे बुलेट पॉइंट्स उसी तरीके से मार्क करने हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर मैंने एक ही बुलेट पॉइंट मार्क किया है, देन यू पीपल शुड ऑल्सो मार्क ओनली 1 बुलेट पॉइंट और मेक ओनली 1 बुलेट पॉइंट out of your paragraph. I just make 1 bullet point that because I know that the whole crux that I have read in that particular paragraph will be there in that particular bullet point. You can frame 3-4 bullet point according to your will. That would help you in the last, that about what you have read till now. So okay, that would help you in the last कि भाई आपने अभी तक क्या पढ़ लिया है, अब आपको उससे क्या समझ में आया है वो आपको इन्फर करेगा. नाउ अगर हम बात करें कि टोन पता ही नहीं पड़ती है एडिटर की या ऑथर की, टोन किस तरह की है यहाँ पर पैसेज में. सो अगर हम देखें तो यहाँ पर एडिटर की या ऑथर की जो टोन है, अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ एनालिटिकल टोन थी क्योंकि वो एनालाइज कर रहा था डिफरेंट एसोसिएशंस को. अगर हम जो है सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं जहाँ पर चाइना का ट्रम्प कार्ड के बारे में बात हुई है और उसके और जो डिफरेंट कंट्रीज़ है उनके ज्वाइनिंग के बारे में बात हुई है, उनके जो एजेंडा है ब्रिक्स ज्वाइन करने का उसके बारे में बात हुई है, तो वहाँ पर ऑथर जो है मोर और लेस क्रिटिकल एज वेल एज स्केप्टिकल हो जाता है. क्रिटिकल क्यों? क्योंकि जो एजेंडाज है उसको लगता है कि जो एजेंडाज है पर्टिकुलर कंट्रीज़ का ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए दे आर सेल्फिश, तो वहाँ पर वो एजेंडा की वजह से वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है. और स्केप्टिकल क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो पैराडॉक्स बता रहा है कि
however BRICS is losing its charm, BRICS is losing its mojo, then also the countries are willing to join it or to enroll in this particular association. So that's why यहाँ पर skeptical, critical and analytical, all the three tones are used by the editor. Now if I say कि भाई editor जो है वो उसका attitude क्या है, so editor is also hopeful in the last, editor जो है वो sanguine है, बहुत ही last में बहुत ही ज़्यादा hopeful है कि possibly that grouping's future will be better than its past. So we can say the attitude of the author is hopeful here in the concluding paragraph. Now आई हैव टोल्ड यू पीपल कि हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे कि जब जो हम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मार्क कर लेते हैं तो वो हमको किस तरह से रजिस्टर करने हैं, किस तरह से रिकॉर्ड करने हैं हमारी नोटबुक में. आई हैव मेड अ टेम्पलेट फॉर दिस. नाउ जो वर्ड हम लोगों ने पढ़े, हमको सबको पता है कि हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है. जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है उनका मतलब भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसको किस तरह से हमको रिकॉर्ड में रखना है, किस तरह से हमको रजिस्टर करना है. सो दिस इज़ द मेथड इन विच यू शुड रजिस्टर और रिकॉर्ड योर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और वोकैबुलरी वर्ड्स दैट यू हैव मार्क्ड फ्रॉम योर editorial. Now what could be it? For example, we have learnt about this word whether right or wrong. Yes, we have learnt about it. So its synonym is wilt. Wilt जो है वो उसका synonym है. That means कि कोई चीज़ अगर decaying है, कोई चीज़ deteriorate होने वाली है, उसको हम क्या कहते हैं? Wilt कहते हैं. What could be its antonym? Thrive. Now wither and prosper. Wither means something that is going to decay and prosper means something that is going to flourish. So wither and prosper, the words that were used in the passage are antonymous to each other. Nextly is what part of speech is it? So it is a form of verb here. Wither का मतलब क्या होता है? Wither is used in the form of verb. And what should be the sentence? How can we use it in sentence? So old myths either die or wither away. Old myth का मतलब क्या होता है? पुरानी जो कहावतें हैं या फिर हम कह लें पुराने जो अंधविश्वास हैं. ओल्ड मिथ्स either die, पुराने अंधविश्वास या तो मर जाते हैं या फिर डीके होते रहते हैं, डिटेरियोरेट होते रहते हैं. नाउ heyday is pinnacle zenith, you can also say zenith, so it is its synonym. आपको synonym रखने हैं अपने particular record में, वर्ड रखना है, वर्ड के साथ हमको सिनोनिम रखने हैं, सिनोनिम के साथ ही हमको एंटोनिम को भी इनकॉर्पोरेट करना है, बिकॉज देयर आर क्वेश्चंस इन वी हैव एनकाउंटर्ड मैनी एग्जामिनेशन पैटर्न जिसमें सिनोनिम भी पूछा जा रहा है, वर्ड का एंटोनिम भी पूछा जा रहा है. सो अगर आपको पता है किसी वर्ड का मतलब क्या है बट इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट्स एंटोनिम तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है. सो हेडे का मतलब होता है पिनाकल, इसका एंटोनिम होता है नडेर, नडेर का मतलब होता है द लोवेस्ट पॉइंट इन लाइफ इज कॉल्ड एज नदेर. एंड इट इज़ व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज इट? इट इज़ नाउन. एंड हाउ कैन यू यूज इट इन एनी सेंटेंस? देन द कंपनी enjoyed a glorious heyday in 1980s. Communiques means bulletin. Bulletin का मतलब you can also say bulletin. Broadcast is also called as correct Nikhil. It is the editorial from 24th में. Communiques means bulletin और broadcast. इसका मतलब जब हम openly किसी चीज़ को announce करते हैं उसको communiques कहते हैं. And its antonym क्या हो जाएगा? Secret. And what part of speech is it? It is noun and the foreign ministry issued a कम्युनिक. सो यहाँ पर वोकैब के लिए इस तरह का रिकॉर्ड रखना क्यों ज़रूरी है? बेसिकली आपकी एक नोटबुक तैयार हो जाएगी डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स की, और वो भी द हिंदू के ही वोकैबुलरी वर्ड्स की. सेकेंडली वर्ड्स को किस तरह से यूज़ करना है किसी भी सेंटेंस में, इट वुड बी ईजियर फॉर यू वंस यू हैव framed this type of record in your register or you have registered this type of record with yourself. Okay, so this was it for today's editorial. I hope you people have liked and enjoyed it, and thank you for your support for today. Thank you, students.